Yes, devastating news for Hello, good afternoon, all. Good afternoon. Hello, all. Am I audible?
Yes, sir. In last lecture we were discussing about the ribosomes. कल के लेक्चर में हम राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. Can you tell me what is the function of ribosome? क्या होता है फंक्शन राइबोसोम का? Protein What is the- synthesis. Yes, the function of ribosome is the protein synthesis. And ribosomes can be present in the free form or can be present in the bound form. Ribosomes free form में भी present हो सकते हैं और bound form में भी present हो सकते हैं, right? So if the ribosomes are in the bound form, they are bound to the endoplasmic reticulum, and if they are present in the free form, Video pause झाला. yes, hello. What are the two subunits of the 70S ribosome? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 70S ribosome के दो सबयूनिट कौन से? Please tell. 30S and 50S. 30S 30S and and 50S. So what are the rRNA present in 30S? 30S में कौन से 16. rRNA होता है? Yes. 30S में कौन सा rRNA होता है? Just a minute. 16. 16. 16. कौन सा rRNA? 16S rRNA. 16S rRNA is present, right? And what is the rRNA present in 50S? 23. 23 sRNA. sRNA. 5S, 23S and 5S. और इसमें 80S टाइप ऑफ राइबोसोम के दो सबयूनिट कौन से हैं? 40S and 60X. 40S and 60S. 40S, दूसरा है 60S. 40S का सबयूनिट कौन सा है? 18S. 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 18S rRNA. और 60S का 28. 28. 5.8 and 28 and 5. 5.5. 5.8S and 5.8. 5. 5. these are the rRNAs present in the 70S and 80S type of ribosome. 70S और 80S में ये टाइप के rRNA जो होते हैं present हैं. So these are the types of rRNA present in the 70S and the 80S type of ribosome. So generally the ribosomes which are present in the free form. Free form of ribosomes are the ribosomes which are present in the cell cytoplasm. Directly cell के cytoplasm में जो ribosomes आपको दिखाई देते हैं. Suppose this is a cell. Cell होगी तो cell के अंदर nucleus होगा. Nucleus होगा तो यहाँ पे ER होगा, ठीक है? Endoplasmic reticulum होगा. और इस endoplasmic reticulum को कुछ ribosome associated होंगे. तो ये जो ribosome में जो endoplasmic reticulum को associated है, इन्हें हम बोलते हैं bound ribosome, right? इन्हें हम क्या बोलेंगे? Bound ribosome. Bound ribosomes. Ribosomes that are bound to the endoplasmic reticulums are called as bound ribosomes. अब ये जो bound ribosomes है, ये जो bound ribosomes आपको दिखाई देते हैं, इनका क्या फंक्शन है? It is also involved in the protein. ये भी protein synthesis में ही involved. तो generally जो cell, सुनो मेरी बात, जो cell extra cellular enzyme ज्यादा तैयार करते हैं, extra cellular enzymes, जो cells एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं या फिर जो सेल्स ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स बनाते हैं, ऐसे सेल्स जो होते हैं इनके अंदर आपको बाउंड राइबोसोम्स बहुत सारे दिखेंगे. Because the endoplasmic reticulum is large in size, rough endoplasmic reticulum is large in size in the cells which are producing the extracellular enzymes. जो सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स ज्यादा बनाते हैं, एस एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल के बाहर छोड़ने वाले एंजाइम्स, लाइक आवर पैंक्रियास. वी कैन टेक वन एग्जांपल हियर. आवर पैंक्रियास, पता है ना आपको? पैंक्रियास, पैंक्रियास इज द ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस. हमारे जो पैंक्रियास होते हैं, पैंक्रियास बनाते हैं एक टाइप का जूस जिसे हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस. In digestive system,
about digestive system. If you have learned in the 10th class, 10th या 9th में आपने अगर digestive system देखा होगा, इस digestive system में आपने एक gland को देखा होगा. इस gland का नाम है pancreas. Pancreas जो है ये बनाती है pancreatic juice. Pancreatic juice जो होता है, इस pancreatic juice में होते हैं various digestive enzymes. Various kind of digestive enzymes are present in the pancreatic juice produced by the pancreas. अब ये जो पैंक्रियाज होते हैं, पैंक्रियाज के अंदर एक टाइप के सेल्स हैं. These cells are called as acinar cells. एक नाम है इन सेल्स का, acinar cells. acinar cell of pancreas. याद रखो, एक टाइप के सेल्स है पैंक्रियाज के अंदर जिसे हम बोलते हैं acinar cells. Remember this acinar cells of the pancreas are involved in the synthesis, involved in the production of the enzymes. कौन से enzymes? Lipases, amylases. आपको पता है what is the function of amylase? Amylase is involved in the breakdown of the carbohydrate. Lipases in the breakdown of the lipid and fat. Nucleases in the breakdown of the nucleic acid. Proteases in the breakdown of the proteins. So proteases, lipases, amylases, nucleases, such kind of enzymes are produced by the acinar cells of the pancreas. तो ये जो pancreas है, इस pancreas के अंदर acinar cells present होते हैं. These acinar cells produce the digestive enzymes, extracellular enzymes, and these enzymes are released in the pancreatic juice, and finally this pancreatic juice is released into the small intestine. Do you remember? Do you know? आपको पता है स्टमक के बाद का पार्ट कौन सा हमारा सबसे पहला पार्ट है हमारा? देखो, माउथ स्टार्ट हुआ तो ईसोफेगस होगा, ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन का एंड वाला पार्ट है जिसे हम बोलते हैं एनस. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है हमारा, इसके अंदर डाइजेशन होता है, और ये डाइजेशन होने के लिए एंजाइम्स जरूरी है. और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर स्टमक को कनेक्ट होता है, वो जो रीजन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे बोला जाता है डिओडेनम. क्या बोला जाता है? डिओडेनम. सो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है डिओडेनम, DUODENUM. डिओडेनम इज अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये जो डिओडेनम है, इस डिओडेनम में पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है. पैंक्रियाटिक जूस बनाता कौन? पैंक्रियाटिक जूस बनाता है पैंक्रियास. और इस पैंक्रियाटिक जूस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज किए जाने वाले हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाता कौन? These are produced by the acinar cells. Have you got this? So here I have taken one example that the acinar cells of the pancreas are involved in the production of the pancreatic enzymes. These pancreatic enzymes are released in the pancreatic juice, and finally this pancreatic juice is released into the duodenum of the small intestine, in which the digestion of the food occurs. So small intestine में food का digestion होता है. इस digestion के लिए जो enzymes जरूरी है, ये enzymes बनाए जाते हैं pancreas में, और pancreas में एक type के cells होते हैं जिन्हें बोला जाता है acinar cells. Remember these names. Acinar cells. Acinar cells are involved in the production of the enzymes. तो ये जो एसिनार सेल्स होंगे, इमेजिन करो सपोज एक एसिनार सेल है, तो एसिनार सेल को क्या बनाना है? एसिनार सेल को प्रोटीन्स बनाना है. व्हाई प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर द एंजाइम्स. यहाँ पर एंजाइम जो है, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. ये याद रखो. तो जो भी एंजाइम्स होते हैं सब प्रोटीन ही होते हैं, और प्रोटीन बनाना है तो किस पे बनाना पड़ेगा? राइबोसोम. तो ऐसे सेल्स, such cells in which the more protein formation occurs, such cells have the large size endoplasmic reticulum. इसमें endoplasmic reticulum की साइज बड़ी होगी, endoplasmic reticulum की साइज बड़ी होगी, the number of the ribosomes will be more. तो इनमें number of ribosomes भी ज्यादा होगी. Number of ribosomes will be also more in such cells. ऐसे सेल में राइबोसोम का काउंट भी ज्यादा होगा. आया समझ में? So what is the function of the bound ribosomes? Bound ribosomes are also involved in protein synthesis. They are generally involved in the extracellular enzyme production. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हमने, extracellular enzyme production में भी ये जो राइबोसोम होते हैं, bound ribosomes involved होते हैं. Okay, just a minute. Just a minute. Shivani has asked me a question. What is the acinar cell? Acinar cell क्या? देखो, जो पैंक्रियाज होते हैं, देखो सुहानी ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एसिनार सेल? तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज एसिनार सेल. देखो, कोई भी ऑर्गन होता है तो उस ऑर्गन में अलग अलग टाइप के सेल्स. कोई भी ऑर्गन जब होता है तो उस ऑर्गन के अंदर अलग अलग टाइप के सेल होते हैं.
वैसे ही पैंक्रियाज एक टाइप का ऑर्गन। पैंक्रियाज को हम एक ग्लैंड भी बोल सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ ग्लैंड। इस ग्लैंड में, पैंक्रियाज जो ग्लैंड है, इसमें कुछ एंजाइम भी बनाए जाते हैं और कुछ हार्मोन भी बनाए जाते हैं। तो टॉपिक निकला है तो आई विल एक्सप्लेन दिस। तो सपोज पैंक्रियाज क्या है, सुनो इधर प्लीज पे अटेंशन। तो हमारा जो स्टमक होता है, देखो ये सपोज ये हमारा स्टमक जे शेप ऑर्गन है। ये हमारा सपोज स्टमक है व्हिच इज अ जे शेप ऑर्गन। स्टमक जहां पर डिओडेनम का अटैच होता है, स्टमक जहां पर डिओडेनम का अटैच होता है, यहाँ पर एक स्पेस होता है, यहाँ पर एक लीफ के जैसी ग्लैंड दिखाई देती है, यहाँ पर एक लीफ के जैसी ग्लैंड दिखाई देती है, प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पर एक लीफ के जैसी ग्लैंड दिखाई देती है। ये लीफ के जैसी जो ग्लैंड है, इसे बोला जाता है पैंक्रियाज। स्टमक जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैच होता है, ये पार्ट है डिओडेनम। डिओडेनम, डिओडेनम, ये है स्टमक, ये है डिओडेनम। तो स्टमक डिओडेनम को जहां पर अटैच होता है, वहां पर एक ग्लैंड आपको दिखाई देती है, ये वाली ग्लैंड, इसे हम बोलते हैं पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। ये जो पैंक्रियाज है, दिस पैंक्रियाज इज अ ग्लैंड, इसे हमने बोला ग्लैंड। अब इस पैंक्रियाज में अलग अलग टाइप के सेल्स, अलग अलग टाइप के सेल्स। इन पैंक्रियाज में दो टाइप के सेल्स है। सबसे पहले एक याद रखो, एक होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये एक टाइप के सेल्स है पैंक्रियाज। आगे जाके इसका भी रेफरेंस आपको मिलेगा। पैंक्रियाज में एक टाइप के सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और दूसरे टाइप के जो सेल्स होते हैं पैंक्रियाज में, वो है एसिनार सेल्स। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल्स, याद रखो। ये क्या है? एक टाइप ऑफ सेल। पैंक्रियाज में आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दिखाई देते हैं, ये भी एक टाइप के सेल्स। और दूसरे टाइप के सेल दिखाई देते हैं एसिनार सेल्स, ये भी एक टाइप के सेल। अब ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम के सेल है, इनमें और तीन टाइप के सेल्स। Again, in this three types of cells are, one is alpha, one is delta, okay, और third है beta। अल्फा, डेल्टा और बीटा। देखो, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ऐसे बहुत टाइप के, ऐसे थ्री टाइप आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। सर ते लँगरहॅन्स काय आहे? लैंगरहैंस म्हणजे त्यांना नाव दिलं, that type of cell. Acinar cell is the name given to that असं type असं of ओढायचं नाही बाळा, cell. हे पकडायचं माऊस. That is the name जागा given नव्हती to बुक that type of ठेवायला. cell. These are different type of cells. Okay, म्यूट करू का रे? Sir, Okay, please pay attention. You have to remember that acinar cells is the name given to one type of cell. और ये जो acinar cells होते हैं, acinar cells, these acinar cells are involved in the release, is involved in the production of the enzymes. क्या बनाते हैं acinar cells? एंजाइम बनाते हैं। जो एंजाइम्स को किसमें रिलीज किया जाता है? पैंक्रियाटिक जूस में रिलीज किया जाता है। जिस एंजाइम को पैंक्रियाटिक जूस में रिलीज किया जाता है, ऐसे एंजाइम को बनाने का काम पैंक्रियाज के अंदर कौन से सेल्स करते हैं? पैंक्रियाज के अंदर वो सेल्स है एसिनार सेल्स। ये पॉइंट क्लियर है आपको? दूसरा पॉइंट, पैंक्रियाज के अंदर दूसरे टाइप के भी सेल है, कौन से? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है, इसमें तीन टाइप इसमें अगर और तीन टाइप के सेल्स दिखाई देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल, बीटा सेल। ये भी नाम दिए हैं, these are the names given to these type of cells. एंजाइम जो होते हैं एसिनार सेल बनाते हैं, भक्ति एसिनार सेल एंजाइम बनाता, and these enzymes are lipases, amylases, nucleases, like this. Lipases, amylases, nucleases, proteases are the enzymes which are required for the digestion in the small intestine. Small intestine में digestion के लिए जो जो enzyme चाहिए, ये सब enzymes एसिनार सेल में बनेंगे, right? And these enzymes are released in the pancreatic juice, और pancreatic juice को रिलीज किया जाएगा small intestine। ये क्लियर है आपको? दूसरा पॉइंट, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये भी पैंक्रियाज में होने वाले सेल है, लेकिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंजाइम नहीं बनाते। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनाते हैं हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन बनाते हैं? बीटा सेल्स जो होते हैं, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनाते हैं इंसुलिन। हैव यू हर्ड अबाउट दिस हार्मोन? हैव यू हर्ड अबाउट दिस हार्मोन? इंसुलिन।
Yes, sir. इंसुलिन ये Yes, जो हार्मोन है sir. ना, ये पैंक्रियाज के बनाते हैं बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये लैंगरहैंस वाले सेल तो हार्मोन ही बनाए। तो ये जो है बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, ये इंसुलिन बनाते हैं। और ये जो अल्फा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये एक हार्मोन बनाते हैं। उस हार्मोन का नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन Glucagon is the hormone produced by the alpha cells of the Langerhans। और अगर ये जो देखेंगे आप डेल्टा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, तो डेल्टा सेल्स एक हार्मोन बनाते हैं, उसका नाम है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। अभी यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस राइट नाउ। अगर याद हुआ तो याद रखो, लिखने की भी जरूरत नहीं है, एक बाजू को बता दो। इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, लेकिन अगर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज समवन आस्क मी व्हाट इज पैंक्रियास, पैंक्रियास के अंदर सेल कौन सा, what is the acinar cell? So I have given you answer. What is the acinar cell? Acinar cell are the cells which are involved in the production of the digestive enzymes of the pancreas। और pancreas के अंदर दूसरे टाइप वाले सेल भी होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं। तो ये देखो, इंसुलिन इज अ हार्मोन, ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन इज अ हार्मोन। These hormones are produced inside these cells। तो देखो, इसी वजह से पैंक्रियास को ग्लैंड भी बोला जाता है। पैंक्रियास इज द ग्लैंड। Why it is a gland? Because pancreas is secreting the enzymes as well as the hormones। Pancreas enzyme भी बना रहा है और enzyme को भी रिलीज कर रहा है, and pancreas is also producing the hormone। Langerhans is the name of the cell। It is the name of the cell inside the pancreas। इतना ही समझ लो, ठीक है? It is a cell। These are the type of cells। Langerhans are the type of cells which are producing the hormone। क्या बना रहे? Langerhans are the type of cells which are producing the hormones। These hormones are glucagon, somatostatin and insulin। Such hormones are produced by pancreas। और acinar cell क्या बनाते हैं? acinar cell produces the enzymes which are required for the production of the pancreatic juice। राइट? तो अभी मैंने आपको बताया कि पैंक्रियास के अंदर जो सेल्स होंगे, लाइक acinar cell कंसीडर करो आप, या फिर इसे भी कंसीडर करो, Langerhans cell कंसीडर करो। यस, Langerhans करो या फिर acinar cells कंसीडर करो। सर ते Both of डिफाईन them। करा ना, लँगरहॅन्ड काय होतं ते? Langerhans ही एक टाइपची सेल आहे। इट इज अ टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द पैंक्रियास, इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। पैंक्रियास के अंदर जो हार्मोन है, ये बनाने वाली जो सेल है, इससे हम बोलेंगे Langerhans cells। ठीक है? ये हार्मोन बनवणारी सेल, एंड ही सेल कोणती आहे? acinar cell। इट इज अ एन्झाइम प्रोड्यूस। एन्झाईम बनवणार. Enzyme बनवणारी cell. आता हे जे आहे, insulin is a hormone। Hormone is also a protein and enzyme is also a protein। Hormone is also a protein and enzyme is also a protein, right? सर लँगरहॅन्ड स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये असते ना? Langerhans मी हे दोन्ही पॅनक्रियाज मध्ये असतात असं सांगितलं बाळा। ओके दोन्ही ओके. टाईपच्या सेल पॅनक्रियाज मध्ये असतात आणि ॲसिनार सेल पॅनक्रियाटिक ज्यूस बनवतील आणि पॅनक्रियाटिक ज्यूसला रिलीज केलं जातं। कशामध्ये रिलीज केलं जातं? स्मॉल इंटेस्टाईन। ओके ओके सर. स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये डायजेशन होणार आहे ना, मग डायजेशन तर म्हणजे दोन्ही सेल्स पॅनक्रियाज मध्येच असतात ना? यस, मी हे सांगितलं ते सांगतोय की पॅनक्रियाज मध्ये दोन टाइपच्या सेल आपल्याला दिसतात। एका टाइपच्या सेल आहेत एसिनार सेल्स व्हिच कैन प्रोड्यूस, उनका फंक्शन अलग है। एसिनार सेल्स क्या बनाते हैं? पैंक्रियाटिक एंजाइम्स बनाते हैं, जो पैंक्रियाज के अंदर एंजाइम बनते हैं। इन एंजाइम को रिलीज किया जाता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। पैंक्रियाटिक जूस से ये एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस से ये एंजाइम रिलीज होंगे एंड दे आर रिलीज्ड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मध्ये जे काही एन्झाईम्स रिलीज होतात पॅनक्रियास पासून, ते पॅनक्रियाटिक ज्यूस द्वारे जातात। ओके, पैंक्रियाटिक जूस द्वारे जातात। तो लिखना है तो लिख लो, चलो एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, चलो समझ में आ जाएगा फास्ट। राइट राइट। बाउंड राइबोसोम्स, बाउंड राइबोसोम्स, बाउंड राइबोसोम्स, बाउंड राइबोसोम्स are present in the cells, are present in the cells which are generally involved in the production of extracellular enzymes, in the production of extracellular enzymes,
extracellular enzymes. Extracellular enzymes. Done with this? Done with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. For example, acinar cells of the pancreas. For example, acinar cells of the pancreas. Acinar cells of the pancreas. Acinar cells of the pancreas produces pancreatic enzymes. Produces pancreatic enzymes. Pancreatic enzymes. Like pancreatic enzymes like lipase, Lipase, lipase. Second, amylase, amylase. Nuclease, NUCLEASE, nuclease. Lipase, amylase, nuclease. Sir, what is the function of nuclease? Nuclease degrade nucleic acid. Nucleic acid को degrade करता है. Nucleases is involved in the degradation of the nucleic acid. राजस ते नंतर सांगतो काय फंक्शन आहे. ज्यावेळेस आपण हार्मोन शिकू त्यावेळेस मी तुम्हाला यांचे फंक्शन सांगेन. आता जर मी सोमॅटोस्टॅटिन आणि ग्लुटाथिओन कडे गेलो तर पुन्हा एक लेक्चर लागला. मी तुम्हाला सांगेन व्हॉट इज देअर फंक्शन. फक्त एवढं सांगतो की याचं फंक्शन याच्या अपोजिट असतं. या दोघांच्या अपोजिट असतं. सोमॅटोस्टॅटिनचं फंक्शन या दोघांच्या अपोजिट असतं. ओके ठीक आहे. हा पार्ट एनसीईआरटी मध्ये हा पण नाही दिलेला. या लेसनशी रिलेटेड हा पार्ट नाही दिलेला. एकाने मला विचारलं म्हणून मी एक्सप्लेन केलं की ऍसिना सेल बरोबर दुसऱ्या टाईपच्या सेल कोणत्या असतात. ठीक आहे. आपण एनसीईआरटी मध्ये नाही दिलेलं. एवढंच दिलं. तुमच्या बुक मध्ये पण एवढंच दिलं. ठीक आहे. तर मी पूर्णपणे एक्सप्लेन करेन. डोंट वरी. हे पण आपल्याला आहे थोडस आता हॉर्मोन आपल्याला जेव्हा स्टडी करायचं त्याच्यामध्ये हे आहे सर. प्लस मी त्यावेळेस इन डिटेल तुम्हाला सांगेन काय त्यांचे फंक्शन. ठीक आहे. तर टॉपिक आपला दुसरा चालू होईल आणि मग या मेन टॉपिक बरोबर आपण राहणार नाही. सो वी हॅव रिटन राईट अमायलेज, लायपेज, काय लिहिलं न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है. राजेश काय लिहिलं न्यूक्लियसचं फंक्शन. न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व इन द डिग्रेडेशन ऑफ द न्यूक्लिक ऍसिड. येस लिहिले का. प्रोटीएज लिहा मग लास्ट एक. प्रोटीएजेस आर रिक्वायर्ड. प्रोटीएजेस कशासाठी लागतात. Degradation of protein. Degradation of protein. So we have written the acinar cells are involved in the digestion of. Acinar cells are involved in the release of the enzymes. कोणते enzymes? एकदा परत रिपीट करता. Acinar cells are involved in the release of the enzymes. Enzymes. Okay. Enzyme के नाम आपने लिखे. These enzymes are released in pancreatic juice. These enzymes are released in the pancreatic juice. These enzymes are released in pancreatic juice. Pancreatic juice. These enzymes are released in the pancreatic juice. Okay. So this is one example we have taken. बस एवढं sufficient आहे. हे नका लिहू. हे आपण नंतर लिहूया. ठीक आहे. तुम्हाला हे पुन्हा आहे आपल्याला सिलेबस मध्ये. आणखी 1-2 महिन्यांनी आपल्याला ते घ्यायचं. ज्या वेळेस ज्याचा रेफरन्स तुम्हाला फक्त आयडिया दिली इथे हे लक्षात राहील. ठीक आहे. चलो राइट नेक्स्ट. पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर हम देखेंगे. सेकंड देखो. First point we have discussed that the ribosomes which are in the bound form are releasing the extracellular enzymes. So for that we have taken the example of the acinar cells. Acinar cells of the pancreas produces or releases the enzymes which are required for the digestion, right? Digestion of the food. And some ribosomes are present in the free form. आता लक्ष द्या. Not all ribosomes are present in the bound form. Some ribosomes are also present in the free form. काही राइबोसोम हे free form मध्ये पण असतात. So these ribosomes which are present in the free form, ribosomes जो free form में होते हैं, these ribosomes are also involved in the production of the proteins. तो जनरली ये राइबोसोम कौन से प्रोटीन बनाते हैं.
जो फ्री फॉर्म वाले राइबोसोम होते हैं, दिस फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम्स generally produces the proteins or the enzymes which are required for the utilization of the sugar. You know that हमने देखा था कि कभी भी शुगर जो होती है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ग्लूकोज सेल के अंदर आएगी, देखो प्लीज पे अटेंशन। हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि ग्लूकोज जब सेल के अंदर आता है तब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। कैसे होता है ब्रेकडाउन इस ग्लूकोज का? सबसे पहली स्टेप होती है साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं हमसे? ग्लाइकोलिसिस। The first step is the breakdown of the glucose to produce the molecules of the pyruvic acid. एक ग्लूकोज जो होता है उसका ब्रेकडाउन होकर दो पायरुविक एसिड बनते हैं, और जो ये जो आगे पायरुविक एसिड बनेंगे, these are transported into the mitochondria. तो सबसे पहला ब्रेकडाउन जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ग्लूकोज का। ये जो ब्रेकडाउन है इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। यू रिमेंबर? आठवतं का तुम्हाला? हेलो, Yes, sir. येस सर. येस सर. आम्ही सांगितलं तर ग्लुकोज सेलच्या आतमध्ये येतो आणि आतमध्ये आल्यानंतर त्या ग्लुकोजचं ब्रेकडाउन होतं। या स्टेपला म्हणतो आपण ग्लायकोलायसिस। याशी वी कॉल इट ॲज द ग्लायकोलायसिस. Glycolysis is the step in which the glucose is broken down into the 10 steps. देखो ये ग्लाइकोलाइसिस जो है, इस ग्लाइकोलाइसिस में 10 स्टेप्स होते हैं। इन 10 स्टेप्स में एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं। तो what is a glycolysis? Glycolysis is the breakdown of the glucose to produce the two molecules of the pyruvic acid. Two molecules of the pyruvate. Pyruvate means pyruvic acid. Pyruvate is the pyruvic acid. So glucose is broken down to produce the two molecules of the pyruvic acid, and these are the 10 steps of the glycolysis. ये 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, और ये जो 10 स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, इसमें ग्लूकोज का कन्वर्जन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6,5 फॉस्फेट, डीएचएपी, ऐसे मॉलिक्यूल्स उससे बनते बनते जाते हैं और फाइनली उससे दो पायरुविक एसिड बनते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इनसाइड द सेल के साथ, इनसाइड द सेल साइटोप्लाज्म। तो सेल के साइटोप्लाज्म में ये जो स्टेप्स होते हैं इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और इसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए, इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए, ये एंजाइम्स जो है ये बनाता है फ्री राइबोसोम। कौन बनाता है? फ्री राइबोसोम। So free ribosomes are involved, है ना? तो हमने क्या देखा सबसे पहले? बाउंड ribosomes are generally involved in the production of the extracellular enzymes. Like हमने देखा कि acinar cells have the large endoplasmic reticulum, और इसके अंदर जो ribosomes होंगे rough endoplasmic reticulum के अंदर, and these are involved in the production of the extracellular enzymes. और जो free form of enzyme होते हैं, these are generally involved in the production of the enzymes which are required for the utilization of the sugar. आया समझ में आपको? तो फ्री फॉर्म ऑफ जो राइबोसोम है ये ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो साइटोप्लाज्म में। गेटिंग राइट? ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, हैव यू गॉट दिस? सबसे पहले मुझे बताओ, हैव यू गॉट दिस? सर एकदा शॉर्ट ओके, देखो मैंने क्या बताया आपको? रिपीट करा ना. हाँ, रिपीट करता है। जे बाउंड फॉर्म मधले जे राइबोसोम आहे, बाउंड फॉर्म मधले जे राइबोसोम आहे, हे काय बनवतात? बाहेर बाहेर सोडणारे एंजाइम त्यांनी बनवले। पण जर मग फ्री फॉर्म वाले राइबोसोम असतील, फ्री फॉर्म वाले राइबोसोम मीन्स राइबोसोम्स विच आर फ्रीली प्रेझेंट इन द सेल साइटोप्लाझम. जे राइबोसोम सेलच्या साइटोप्लाझम मध्ये फ्रीली प्रेझेंट असतात, असे जे राइबोसोम असतात जे फ्रीली प्रेझेंट आहेत साइटोप्लाझम, हे काय बनवतात? हे सुद्धा एंजाइम बनवू शकतात, हे सुद्धा प्रोटीन बनवू शकतात. तो कोणते प्रोटीन बनवतात? मग इथे एक एक्झाम्पल दिलं, हे फ्री फॉर्म वाले जे राइबोसोम्स आहेत हे असे प्रोटीन बनवतील जे साइटोप्लाझम मध्ये गरजेचे असतात. फॉर एग्जाम्पल, साइटोप्लाझम मध्ये ग्लाइकोलिसिस occur inside the cytoplasm of the cell. सर सर. लाईट गेले बहुतेक. लाईट गेली, आवाज येतो का? हा सर हो सर, सर, येतोय. येतोय येतोय सर. ओके प्लीज कंटिन्यू। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया कि ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज का ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए कुछ एंजाइम जरूरी है। ये एंजाइम कौन बनाएगा? Who will produce these enzymes? These enzymes will be produced by the enzymes which are these enzymes will be produced by the ribosomes which are present in the free form in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स फ्री फॉर्म में होंगे
ये राइबोसोम्स बनाएंगे एंजाइम्स which are required for the breakdown of the glucose. Getting this? तो फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम, सिंपल इतना याद रखो कि फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम जो है ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम, free form of ribosome जो एंजाइम बनाएंगे, these enzymes will be utilized in the cytoplasm. जो साइटोप्लाज्म वाले फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम है, जो एंजाइम बनाएंगे वही एंजाइम यूज होंगे साइटोप्लाज्म. गेटिंग दिस? और जो बाउंड फॉर्म ऑफ राइबोसोम है, ये बाउंड फॉर्म ऑफ राइबोसोम जो होंगे, these bound form of ribosome will produce the enzymes, will produce the proteins that can be released outside the cell or that can be transported from one organ to the another organ. Okay, so here we have taken one example कि फ्री फॉर्म वाले जो राइबोसोम है, इथे मी असं सांगितलं की जे फ्री फॉर्मचे राइबोसोम आहेत हे सायटोप्लाझम मध्ये आहेत आणि हे जे फ्री फॉर्मचे राइबोसोम आहेत हे एन्झाइम जे बनवतात ते कुठे वापरले जातात, ते सायटोप्लाझम मध्येच वापरले. क्लियर? हो सर. हो सर. त्यासाठी वापरतात. फॉर्म मधले जे राइबोसोम आहेत ते जे एन्झाइम बनवतील कुठे वापरणार ते? दे आर प्रोड्यूस्ड इन सायटोप्लाझम. They are produced in cytoplasm and they are used in cytoplasm. कशासाठी वापरतात? Huh? कशासाठी वापरतात? मी तर काय सांगितलं एक्झाम्पल, ग्लायकोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लुकोज. एक एक्झाम्पल दिलं की ग्लुकोजचं ब्रेकडाउन होतं, त्याच्यापासून पायरुव्हिक ऍसिड बनतं. कुठे होतं हे? इट अकर्स इन द सायटोप्लाझम. कुठे होतं हे? सायटोप्लाझम मध्ये होतं. मग याच्यासाठी लागणारे एन्झाइम कोण बनवतं? फ्री राइबोसोम. कळतंय का? हो, हो, फंक्शन sir. सेम आहे, दोन्ही पण प्रोटीनच बनवणार. हा सुद्धा प्रोटीन बनवणार, हा सुद्धा. हेलो, Yes, sir. येस चलो सर. पहला एग्जांपल हमने लिखा. बघा पुन्हा एकदा सांगतो, ऐका, 1 मिनिटात सांगतो. हे जे बाउंड राइबोसोम आहेत, बाउंड राइबोसोमने काय बनवलं? बाउंड राइबोसोम साठी एक एक्झाम्पल घेतलं. काय बाउंड राइबोसोम साठी आपण एक्झाम्पल घेतलं? कोणत्या सेल्स? एसिनार सेल्स. काय बनवतात? पैंक्रियाटिक एंजाइम्स. सो बाउंड राइबोसोम्स का एग्जांपल हमने लिया, प्रोडक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स. दिस इज फॉर बाउंड राइबोसोम्स. सेकंड एग्जांपल राइट, फ्री राइबोसोम प्रोड्यूसेस एंजाइम्स. लिखो, free ribosomes produces enzymes. Free ribosomes produces enzymes for glycolysis. For glycolysis. For glycolysis. Glycolysis means utilization for breakdown of the sugar. For glycolysis. Write in bracket. Breakdown of sugar. Glycolysis क्या है? Glycolysis is the breakdown of sugar. Glycolysis is the breakdown of sugar. और इस शुगर के ब्रेकडाउन में ये इन्वॉल्व होते हैं. कौन इन्वॉल्व होते हैं? राइबोसोम्स. फ्री राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर बाय प्रोड्यूसिंग द एंजाइम्स. ओके, फ्री राइबोसोम्स लिखो, फ्री राइबोसोम्स प्रोड्यूसेस एंजाइम्स which are required for the breakdown of sugar, for breakdown of sugar in the cell cytoplasm. In the cell cytoplasm. सर रिपीट करो ना प्लीज. Free ribosomes are involved in the production of enzymes. Free ribosomes are involved in the production of enzymes which are required for production of enzymes which are required for breakdown of sugars. Breakdown of sugars. Breakdown of sugars. ओके, सो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो बाउंड राइबोसोम्स होते हैं, इसका एक हमने एग्जांपल लिया. बाउंड राइबोसोम्स, we have taken one example of the bound ribosomes. Bound ribosomes means the ribosomes which are attached to the endoplasmic reticulum. These bound ribosomes are involved in the production of generally the extracellular enzymes. We have taken one example of the acinar cell of the pancreas. For bound ribosome, remember the example of the acinar cell of pancreas, which are involved in the release of the pancreatic enzymes, pancreatic juice. Pancreatic juice तयार करणारे जे acinar cell आहेत, या acinar cell ला आपण कन्सिडर केलं, याच्यामध्ये बाउंड राइबोसोमचे एक्झाम्पल. दुसऱ्या सेल्स जे आपण कन्सिडर केल्या ते आहे सेल, कोणतीही सेल असेल त्या सेलच्या आतमध्ये जे ग्लायकोलिसिस
होता, कोई भी सेल आप कंसिडर कर लो जिसके अंदर जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, फ्री राइबोसोम जो एंजाइम बनाएंगे, these enzymes of the free ribosomes are utilized in the cytoplasm. For example, this process of glycolysis or the process of utilization of sugar occur inside the cytoplasm. Process of utilization of sugars occur inside the cytoplasm, and this requires enzyme, and these enzymes are produced by the free ribosomes. Is it okay? Is it clear? Yes, sir. Is it clear? But just remember that both the type of ribosomes are involved in the production of proteins. Clear है क्या सर्वांना? Yes, Advait. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have discussed that the ribosomes can be in the free form or the bound form. Bound form of ribosome का मतलब अभी जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आया है उनके लिए एक सीधी बात बताता हूँ. Bound ribosomes are the ribosomes which are bound to the endoplasmic reticulum, जिसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्म. उसका भी फंक्शन है एंजाइम बनाना, प्रोटीन बनाना. दूसरे टाइप वाले राइबोसोम जो है वो फ्री फॉर्म ऑफ राइबोसोम है, वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं. इनका भी फंक्शन है एंजाइम बनाना या फिर प्रोटीन. तो दोनों का फंक्शन सेम ही है, लेकिन जनरली क्या होता है ये आपके बोर्ड के बुक में दिया है कि जनरली जो फ्री राइबोसोम होते हैं वो साइटोप्लाज्म में जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है उसे बनाएंगे. ठीक है, क्योंकि फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में. तो जो एंजाइम साइटोप्लाज्म में जरूरी है वो एंजाइम जनरली फ्री राइबोसोम बनाता है, और जो एंजाइम्स ऑर्गेनेल में जरूरी है या सेल के बाहर जरूरी है इसे कौन बनाएगा? इसे बनाएंगे बाउंड राइबोसोम्स. इतना क्लियर कर लो, दिस मच इज सफिशिएंट, राइट? तो हमने देखा राइबोसोम्स के बारे में. We have studied about the ribosomes, function of ribosomes we have studied. Function क्या होते हैं राइबोसोम के, राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम क्या बनाते हैं, this all we have discussed in this lecture. Let us discuss about the next organelle, that is a nucleus. अब जो next organelle हमें देखनी है वो है nucleus. Nucleus. The nucleus is present in the cell cytoplasm. Cell के cytoplasm पे आपको nucleus दिखाई देता है. Nucleus. So this is a cell. Cell के अंदर you can observe the presence of nucleus. So this is the cell cytoplasm. ये सेल का साइटोप्लाज्म है. This is a cell cytoplasm. इस सेल के साइटोप्लाज्म में you can find the presence of a double membrane organelle. यहाँ पर आप देख सकते हो double membrane organelle is present. I am trying to draw this. देखो, you can see I am drawing this. I am showing the two membranes here. So there is a presence of the two membranes. Presence of two membranes. You can see clearly. Presence of two membranes. दो membrane आपको दिखाई दे. These two membranes are separating the cytoplasm. Separating the cytoplasm from the inner content. ये जो inner content है इसे हम बोलते हैं nucleoplasm. Nucleoplasm. Nucleoplasm is the liquid inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर देखो, inside the nucleoplasm you can observe the presence of the genetic material. इसके अंदर आपको ऐसा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, दिखाई देता है.
ये जैसे थ्रेड जैसे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको न्यूक्लियस के अंदर, देखो दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर आपको एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब आपको न्यूक्लियस को देखना है अंडर द माइक्रोस्कोप, यू विल हैव टू स्टेन दैट न्यूक्लियस। आपको उस न्यूक्लियस को कलर देना पड़ेगा, यू विल हैव टू गिव अ कलर टू दैट न्यूक्लियस एंड देन दैट न्यूक्लियस इज क्लियरली विजिबल टू अस। दिस प्रोसीजर जिसे हम बोलते हैं स्टेनिंग, यू नो व्हाट इज स्टेनिंग। तो स्टेनिंग के प्रोसीजर में क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ द स्टेन दिस न्यूक्लियस इज स्टेन, न्यूक्लियस जो होगा वो स्टेन हो जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर यू कैन फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। प्रेजेंस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व्ड इनसाइड द न्यूक्लियस और इसे ही हम बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। याद रखो, इसे हम बोलेंगे क्रोमैटिन मटेरियल। Chromatin material is the thread-like structure present inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड जैसा डीएनए जो दिखाई देता है इसे ही हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमा का मतलब होता है कलर, टीन का मतलब होता है थ्रेड। कलर्ड थ्रेड आर ऑब्जर्व्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको कलर थ्रेड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और इसे ही हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ये मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन मींस इट हैज टू मेम्ब्रेन्स। यू कैन सी that there are two membranes present. एक inner membrane है, ये वाली membrane जिसे हम बोलेंगे inner membrane। दिसते का तुम्हारा inner membrane? हेलो, तुम्हारा membrane दिसते का clear? Yes, sir. Yes, ही आतली sir. membrane आहे, हिला म्हणायचं inner membrane, ठीक आहे? आणि ही बाहेरची membrane आहे, याला म्हणतो आपण outer membrane. ओके, मी इथे ही वेगळ्या कलरने काढतो म्हणजे जरा क्लिअरली दिसेल तुम्हाला। ये इनर मेम्ब्रेन है जो मैंने ब्लैक में निकाली है और ये अब मैं दूसरे कलर में निकालता हूँ, ये है आउटर मेम्ब्रेन। सर वो क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए है ना? हाँ, क्रोमैटिन इज द डीएनए, क्रोमैटिन मध्ये डीएनए। ठीक है, न्यूक्लियस आणि न्यूक्लियोप्लाज्म का डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, ये कोई डिफरेंस नहीं है। न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Nuclear membrane is forming the organelle. This organelle is called nucleus. Inside the nucleus, you can observe the presence of the liquid portion. That is nucleoplasm. That is nucleoplasm. So, a liquid portion present inside the nucleus is the nucleoplasm. Inside the nucleoplasm, you can find this thread-like DNA. This is called chromatin material. इसे हम बोलेंगे chromatin material. अब देखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन में से टू मेम्ब्रेन, एक है ब्लैक में मैंने निकाली इनर मेम्ब्रेन और जो बाहर की है आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है, देखो ये आउटर मेम्ब्रेन इज इन कंटीन्यूअस विद द ईआर, ये बनाती, देखो आउटर मेम्ब्रेन ने क्या बनाया, आउटर मेम्ब्रेन इज फॉर्मिंग द ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने बनाया? इनर मेम्ब्रेन ने बनाया, ये बनाया है आउटर मेम्ब्रेन। You can find this outer membrane is in continuation with the endoplasmic reticulum। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, देखो इनर, तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन इनके बीच में you can find here a space। Can you see the space is present here? ये दिखाई दे रहा है आपको? This is a space। The space between the inner membrane and outer membrane is called perinuclear space। जिसे हम बोलेंगे perinuclear space। I hope you are getting the space between the inner membrane and outer membrane। ये मैंने ब्लू में आउटर मेम्ब्रेन निकाली, ब्लैक में इनर मेम्ब्रेन निकाली, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस दिखाई देती है आपको, इसे हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, इसकी साइज कितनी है? इसकी साइज होती है 10 to 50 नैनोमीटर। कितना होता है साइज? 10 से 50 nanometer। So it is 10 to 50 nanometer। This is the average equipment, 10 nanometer to the 50 nanometer is the size of this space that is called as the perinuclear space। So it is a space between the outer and the inner membrane। outer और inner membrane के बीच में वाली ये space। अब देखो ये जो inner membrane है और outer membrane है, यहाँ पर ये continuous नहीं, it is having some gaps। inner membrane और outer membrane में आपको कुछ gaps दिखाई देते हैं। अच्छे से देखो ये स्ट्रक्चर जो मैंने ड्रॉ किया, यू कैन फाइंड हियर सम काइंड ऑफ गैप्स आर देयर। देखो यहाँ, कैन यू सी दिस? Yes, देखो sir. ये गैप,
This gap is directly in continuation with the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे जो गैप है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूएशन में है. यहाँ पर जो गैप है वो साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूएशन में है. इस गैप को आप बोलते हो न्यूक्लियर कोर. इट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियर कोर. तो आई होप यू आर गेटिंग दिस. दिस इज अ न्यूक्लियर कोर. देखो ये है न्यूक्लियर कोर. न्यूक्लियर कोर इज अ कोर through which the cytoplasm can communicate with the nucleoplasm. cytoplasm और nucleoplasm जो होंगे, देखो cytoplasm और nucleoplasm जो होंगे, this can communicate with each other. ये दोनों एक दूसरे के साथ communicate का मतलब क्या? Some substances can go into the nucleoplasm, some substances can come out into the cytoplasm. तो cytoplasm का nucleoplasm में, nucleoplasm का cytoplasm में, not all, सब नहीं जा सकते, लेकिन कुछ substances वो transport हो सकते हैं. Why they are able to transport? Because here in the nuclear core, some kind of protein is present that is called as the core complex. यहाँ पर एक सिलेंडर वाले शेप का, सिलेंडर जैसे शेप वाले यहाँ पर प्रोटीन होते हैं inside the nucleus. ये जो न्यूक्लियर कोर है, देखो ये जो न्यूक्लियर कोर है, इसमें सिलेंडर के शेप जैसे, देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, सिलेंडर के शेप जैसे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोला जाता है कोर कॉम्प्लेक्स. रिमेंबर दिस, कोर कॉम्प्लेक्स आर द सिलिंड्रिकल शेप प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर कोर. और ये जो प्रोटीन होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि किसे अंदर ले जाना है, किसे बाहर लाना है. सो दीस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर कोर. सो रिमेंबर दिस, न्यूक्लियर कोर हैव अ प्रोटीन कॉल्ड core complex. These protein form a complex called core complex. Core complex regulate the flow of the substances. Regulate the flow of substances. Regulate means क्या? कम ज्यादा, किसे अंदर लाना है, किसे बाहर ले जाना है. All this is decided by the core complex. So core complex is the cylindrical complex, cylinder shaped complex made up of the proteins, which is regulating the flow of substances into the cytoplasm or into the nucleoplasm, right? So you can find that the nucleus is surrounded by a nuclear membrane. याद रखो, nucleus is surrounded by the nuclear membrane. Nuclear membrane is having two layers. One is the inner membrane, other is the outer membrane. इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है इसे हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस. और ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस होती है इसकी साइज होती है 10 नैनोमीटर. पेरीन्यूक्लियर स्पेस ये कंटिन्यूएशन में नहीं है क्योंकि बीच में यहाँ पर गैप है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो गैप दिखाई देते हैं इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर कोर. न्यूक्लियर कोर में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं which form the core complex. ये बनाते हैं core complex. और ये जो core complex होगा ये डिसाइड करता है कैसे substances अंदर या फिर बाहर जाएंगे. So the flow of the substances is regulated by the core complex. Getting this? Flow of substances is regulated by the core complex of the nuclear membrane. यहाँ तक क्लियर है आपको? Is it clear? चलो इसमें कोई डाउट है तो बताओ. No sir. No doubt. समझ लगा कैसा करना? हो सर. चला था एक पॉइंट आणखी पहा. Inside the nucleoplasm you can find a dense area is present. न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर you can find the presence of the dense area. यहाँ पर एक dense area आपको दिखाई देता है. देखो मैंने एक dense area यहाँ पे ड्रॉ किया. This dense area ब्लैक में यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है. इस dense area को हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस. क्या बोलेंगे हम इसे? Nucleolus. Yes, nucleolus is the dense area present inside the nucleus. Nucleus के अंदर ये dense area present. अब what is happening in the nucleolus? The function of nucleolus. Yes, what? Function of nucleolus क्या है? Yes, that is what I am telling. The inside the nucleolus, the rRNA is produced. Nucleolus is involved in the production of the ribosomal RNA. तो ribosomal RNA जो होता है, I am telling not ribosome, I am talking about rRNA. rRNA is produced inside the nucleolus. These rRNA are produced inside the nucleolus and through the nuclear pores. You can find nuclear pores are present. Through the nuclear pores, these rRNA go out and they form the ribosomes. और बाहर जाके इनका राइबोसोम बनेगा. जब ये राइबोसोम्स बनेंगे
these ribosomes can be released in the free form inside the cytoplasm. Ribosomes इससे बनते rRNA से बनते ribosomes, and these rRNA are produced inside the nucleolus. So function of nucleolus is the production of the rRNA. Once rRNA is produced through the nucleolus, these rRNA get released from the nucleus. A nuclear membrane से या nuclear membrane पर जो pore है, through these pores they will come out. They will come out and will go into the cytoplasm, or some of them will bind to the membrane. कुछ जो होंगे वो membrane को attach. So this is a way by which the nucleolus is involved. अब देखो nucleolus is not bound by the membrane. Nucleolus के around membrane नहीं होती. Nucleolus are not a membranous organism. Nucleolus जो है इसके around membrane नहीं होती. Nucleolus is just a dense region. यहाँ पर एक only a dense region दिखाई देता है inside the nucleoplasm. तो ये nucleoplasm है, इसमें आपको ये chromatin material दिखाई देगा और इसके साथ में यहाँ पर आपको dense region दिखाई देंगे. ये जो dense region है इसके around membrane present नहीं होती, इसे ही हम बोलते हैं nucleolus. ठीक है? You can draw the structure. In tomorrow's lecture, the remaining topic we will cover up. So have you understood? Yes. Yes, sir. Okay. चलो. Draw this, then you can leave. सर पुढं. सर ते न्यूक्लिअर पोर मधनं पास झाल्यावर काय होतं त्यांना? Substances nuclear pore मधनं पास होऊ शकतात. कशाला? कोणते पण substances पास होऊ शकतात. नाही ते नाही सर, न्यूक्लिओलस जातं ना. न्यूक्लिओलस rRNA बनवणार, बरोबर? हा. rRNA जो असेल तो या न्यूक्लियर पोर मधनं बाहेर येईल. बाहेर आल्यानंतर त्याला प्रोटीन असोसिएट होतं आणि त्याच्यापासून रायबोसोम. ओके ओके. कळलं? म्हणजे येस रायबोसोम फॉर्मेशन मध्ये rRNA इन्व्हॉल्व असतात आणि rRNA म्हणतात न्यूक्लिओलस. ठीक आहे? येस सर. ओके.